Right. Okay. Hello, everyone, and seems we are live now. So that's what we already have a few people. It seems. So yeah. Hopefully, सबका weekend अच्छा चल रहा है. Sunday. Looking forward to the playoffs now. पहला qualifier, and it's been a good. It's been a good one. अभी तक खैर उतना क्लोज मैचेस नहीं हुए सेकंड लीग में आई थॉट बट आई थॉट इट वाज स्टिल इंटरेस्टिंग so anyways so let's see as we see uh, what can be done. Okay, anyways, hopefully we'll see more and more of you guys coming in and asking questions. Well, as of now, here in Dubai, one of the things that kind of surprised me uh, was the pitches. और मुझे डर इस बात का है pitches को लेके कि भैया अभी ऐसे खेल रहे 150-40 का है which does not bother me much from an India perspective लेकिन पिचेस अगर ऐसी खेलती रहे तो पता नहीं आगे वर्ल्ड कप में क्या होगा एंड दैट इज अ बिट ऑफ अ वरी खासकर शारजा वाला जो पिच है सो आई एम जस्ट अ लिटिल वरीड बट हैविंग सेड दैट मुझे इसलिए उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऐसे पिचेस रहे जहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो तो आई थिंक इंडिया के चांसेस और बेटर हो जाते हैं वर्ल्ड कप में सो दैट्स दैट आई गेस सो बट विल बी इंटरेस्टिंग क्योंकि और एक चीज़ क्या होता है कि जैसे ही आईपीएल खत्म होगा दी द आईसीसी क्यूरेटर टेक्स ओवर द पिचेस तो उनके पास एक हफ्ता मिलेगा क्योंकि पहला जो फेज है वो ओमान में है मस्कट में दे बी प्लेइंग द क्वालिफायर्स तो हफ्ते भर का लगभग ब्रेक मिलेगा आई डोंट नो हफ्ते भर में कितना फर्क पड़ सकता है बट we'll see how the pitches go. Right. So, do we have questions now? And all right, Smayan Gupta, do you think RCB can win this year? I think so. मुझे शुरू में भी मैंने कहा था कि it might be RCB's year. And सच बताऊं जैसे मैंने वीडियो में भी कहा अगर if you guys haven't watched the video एक लंबा वीडियो बना है actually it's up today about whatever has happened so far. Um, and मैं पहले भी कहा I think it could be RCB's year and I also want यार कोई नया विनर हो ना चाहे दिल्ली हो चाहे बैंगलोर हो बिकॉज चेन्नई और मुंबई खैर मुंबई तो इस साल नहीं हो पाएगा लेकिन वी आर जस्ट काइंड ऑफ यूज्ड टू वही चेन्नई मुंबई सो इट बी नाइस अगर कोलकाता भी होता है तो एटलीस्ट it'll be after a few years. Last time I don't remember 15 या 16 में शायद जीते थे. So yeah, I think yes, and not just दिल अगर दिमाग से भी मैं कहूँ तो I think Bangalore's been in really good form. Momentum जिसे कहते हैं वो भी is there towards them. So yeah, I mean why not? I honestly think RCB के पास अच्छा खासा chance है. Okay, Srivats N, do you see Raina come back in place of Robin today? Uh, Interesting one. He might come. Might come back today. Suresh, this could well be. Yeah, because Robin has not fired to be honest. और दो मौके मिले. I know दो मौके ज़्यादा नहीं होते हैं. But having said that, I think Chennai they do not make changes, right? हम सबको पता है कि चेन्नई एक ही टीम के साथ खेलना चाहती है unless it's tactical. लेकिन अगर चेंज किया है तो जो नया आता है उसको पूरा चांस देना चाहते हैं और देते हैं तो एज मच एज आई लाइक सुरेश रैना एंड द फैक्ट दैट रॉबिन ने उतने रन नहीं बनाए आई स्टिल थिंक चेन्नई माइट जस्ट गो विद द सेम टीम क्योंकि दैट इज बीन देयर पॉलिसी आई डोंट थिंक एक मैच के लिए दे वुड चेंज देयर पॉलिसी दैट्स व्हाट आई थिंक श्रीवत्स Nupur, sir, why does rest of Chennai team are struggling after getting out both openers? ये शुरू से ही है नूपुर अगर आप देखो तो पहले लेग में मोइन अली वाज इन गुड फॉर्म समहाउ मोइन अली से उतने रन्स नहीं मिल रहे देन ऑब्वियसली राइडू इज हॉट एंड कोल्ड खराब सीजन नहीं रहा है राइडू के लिए लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा सीजन जरूर और उसके बाद या अनफॉर्चुनेटली जडेजा
थोड़ा सा ज़्यादा पीछे आ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो जडेजा जब भी मिला है वो ही इज़ डन ऑलराइट, बट या द मिडल ऑर्डर हैज़ स्ट्रगल्ड, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पूरे सीज़न में और सेकंड लेग में मिडल ऑर्डर ऑफ एवरी टीम हैज़ स्ट्रगल्ड। मुंबई मिडल ऑर्डर हैज़ स्ट्रगल्ड, चेन्नई मतलब जो अच्छे मिडल ऑर्डर्स हैं, चेन्नई हैज़ स्ट्रगल्ड, चेन्नई हैज़ स्ट्रगल्ड, दिल्ली हैज़ स्ट्रगल्ड। आई थिंक बैंगलोर के अलावा, एंड दैट टू प्रिडोमिनेंटली मैक्सवेल, I don't see too many middle order firing. Punjab hasn't fired, Kolkata has not fired. तो क्योंकि जो पिचेस भी अगर हैं, इफ आई कैन थोड़ा सा और डीप जाऊं इसका, बिकॉज मेरा क्या होता है कि जब भी ऐसा सवाल आता है, कीप आस्किंग माई सेल्फ कि मिडिल ऑर्डर हैज नॉट वर्क सो व्हाई नॉट। तो इफ आई आस्क माई सेल्फ दैट क्वेश्चन क्यों, तो आई थिंक उसका आंसर टू अ सर्टेन एक्सटेंट होगा द पिचेस। अगर आप देखें तो पिचेस जो हैं वो पहले 6-7 ओवर तो अच्छा खेली है मोस्ट ऑफ देम, लेकिन जैसे जैसे 6-7 ओवर के बाद बॉल पुराना होता है, इट हैज़ बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। और अभी फॉर्मेट क्या हो गया ना कि टी20 में सब आके चौके छक्के मारना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में जो वो ग्राफ्ट वाला स्किल है वो नहीं दिखा है। और इन पिचेस में यू नीड दैट स्किल, ग्राफ्ट करना, सिंगल डबल बीच में एक चौका, नॉट पावर हिटिंग। तो मेरे ख्याल से दैट्स द रीजन बिहाइंड मिडिल ऑर्डर इन जनरल नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल इस सेकंड लेग में। आई थिंक सेम गोज विद चेन्नई ऑल्सो। I hope you got that answer, Nupur. Yeah, okay. Ono Mitra Roy, can KKR with a team to beat in the playoffs? वेल ऑल फोर टीम्स आर गुड। एक ही टीम जो थोड़ा सा पीछे मुझे लगता है माइट बी चेन्नई, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। लास्ट 3 मैचेस you know have not won. That's the only thing. Apart from that, I think all four teams, they deserve to be their best teams. KKR का, जैसे चेन्नई का मोमेंटम इज नॉट विद देम, मुझे लगता है कोलकाता के लिए इट्स द अदर वे अराउंड। इस लेग में आई थिंक द बेस्ट टीम हैज बीन कोलकाता to a great extent, and जो momentum है that is with कोलकाता। और लास्ट मैच जो कोलकाता ने खेला and won convincingly, I thought it was a near perfect game क्योंकि middle order scored runs, top order scored runs, bowling was phenomenal. तो yes, KKR can be the team to beat and could be KKR's year also. जैसे मैंने कहा कि the second leg I thought belonged to Kolkata. So all the best, Ono Mitro. Rahul Singh, do you think it's time for Siraj to get rewards for his bowling? Yes, he has been consistent bowler with economy of 7 this season. Rahul, that's right. लेकिन पता लास्ट मैच में सिराज को 2 विकेट मिले थे। somehow he's not getting wickets. मेरे ख्याल से सेकंड लेग में 2 ही विकेट मिले हैं और वो लास्ट मैच में आए। बट लाइक यू सेड राहुल के बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ा बड़ा फर्क पड़ा है सिराज के बॉलिंग में इज दैट डेथ ओवर्स में इस सीजन के पहले उनका इकोनॉमी 12 के करीब था, दैट हैज कम डाउन टू 9। तभी जो आप कह रहे हो ना इकोनॉमी ऑफ 7, बिकॉज वो भी बहुत नीचे है, 12 से 9 आ गया डेथ ओवर्स में। सो इज अ मच मच इम्प्रूव बॉलर सिराज। और ऑब्वियसली फ्यूचर जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन की हम बात करते हैं, दैट इज सिराज। द नेक्स्ट जनरेशन, बुमराह इज ऑल्सो यंग, बट ओनली इशू इज विद फिटनेस एंड ऑल, आई डोंट नो। सो अगला जनरेशन की अगर हम बात करें तो सिराज इज वन ऑफ द मेन bowlers. So yes, he'll be there for sure. Right. Who else do we have? G Paul. Okay, G Paul. Sir, should Andre Russell come in tomorrow if available, or the last playing 11 is good enough? Okay, yeah. Uh, okay, so Kolkata will be playing in Sharjah, right? See, agar Andre Russell is fit, तो he comes in, and he comes in straight swap. I think Shakib ke jagah Andre Russell. But having said that, Shakib has been very very useful. और द फैक्ट दैट शारजा में मैच है, वहाँ पे स्पिन का भी ज़्यादा फायदा फर्क पड़ सकता है, शाकिब के बॉलिंग का फर्क पड़ सकता है। सो या आई मीन आई डोंट थिंक दे मिस आंद्रे रसल अ लॉट, बट आंद्रे रसल एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैच विनर हैं यार। एंड वील हैव टू सी, अगर वो फिट हैं तो आई थिंक ही डज, लेकिन अगर फिट नहीं भी है तो आई डोंट थिंक केकेआर विल मिस हिम बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाकिब इज अ क्वालिटी क्वालिटी प्लेयर। ओके,
Cricket Sarthik. Okay, sir, why ABD Village is not batting like first leg? Big fan, sir. Okay, big fan of ABD Villiers, so am I. If that big fan was for me, thank you very much, Sharthik. Okay, why ABD Villiers? यार, it's difficult to say why because एक तो मुश्किल ये हो जाता है कि even though ABD Villiers is a genius and he's also kind of a I don't know an alien kind of a thing क्योंकि ऐसे ऐसे शॉट्स खेलते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें और इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलें एंड ऑल्सो नॉट प्ले लॉट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट दैट इज व्हाट हैज हैपेंड आई बिलीव ही हैज नॉट प्लेड अ लॉट ऑफ कंपेरेटिव क्रिकेट कमिंग इन टू दिस लेग तो उससे थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है एंड आई थिंक समवन लाइक एबी डिविलियर्स को फर्क पड़ सकता है तो वी कैन वेरी वेल इमेजिन कि सबको फर्क पड़ सकता है मुझे थोड़ा सा वो लगा और थोड़ा सा ये भी लगा कि जो पिचेस हैं जहाँ पे वो बैटिंग करने आते हैं 10 ओवर के बाद हैज नॉट बीन दैट गुड फॉर स्ट्रोक प्ले जैसे खेलते हैं वो क्या है कि उनका अगर आप बैट भी देखें तो सीधे बैट से तो खेलते ही हैं अभी अगेन बट उनके ज्यादातर जो बड़े शॉट्स हैं आर विद अ डायगोनल बैट और हॉरिजॉन्टल बैट और इन पिचेस में जहाँ पे बॉल रुक के आता है ना वहाँ पे हॉरिजॉन्टल बैट शॉट खेलना टाइम करना ज़्यादा मुश्किल है ऊपर से भी ऑल नो कि खासकर दुबई और आबू धाबी का ग्राउंड बहुत बड़ा है सो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स टाइम करना मुश्किल होता है सीधे बैट से मतलब क्या होता है कि मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है कि अगर आप ओके धीरे बॉल आया और आपने जल्दी खेल दिया तो उसमें क्या होता है कि आपका फिर भी बैट पे लगता है करेक्ट एज एन बीच में नहीं तो बीच के आसपास कहीं लगता है विद अ स्ट्रेट बैट वही अगर सोचिए हॉरिजॉन्टल बैट शॉट है और अगर बाउंस सही नहीं आया तो पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है कि आप अगर क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट से सीधा भी खेलते हैं तो अगर यहाँ पे मतलब लेट हो गए आप या जल्दी खेल गए तो यही शॉट आप यहाँ पे खेलेंगे रादर देन मिड ऑफ इट गो टू मिड विकेट तो जब हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स जो ज़्यादा खेलते हैं जैसे एबीडी खेलते हैं इन पिचेस पे थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा होता है टू टाइम द बॉल एज कम्पेयर टू सीधा बैट तो इसलिए कहते हैं कि स्लो पिचेस में जितना जितना सीधा आप खेलेंगे उतना बेहतर है वेल आई थिंक दैट वाज माय टेक ऑन इट I don't know. I mean, do let me know what you think of that. Sir, do you think Chahal has a chance in T20 World Cup? चहल आज 10 तारीख है ना आई थिंक आज फाइनल टीम हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक चहल चहल शुड हैव बीन देयर ये मेरा टेक है बट आई थिंक इट विल आल्सो बी अनफेयर आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अनफेयर चहल नॉट बीइंग देयर नॉट इवन देयर इन द रिजर्व एंड इट विल बी अनफेयर ऑन राहुल चाहर कि भैया आप उनको निकाल दें बेस्ड ऑन whatever 4 games or 5 games. Having said that, एक ज़रूर ये एक प्रॉब्लम है कि ही इज़ नॉट इवन प्लेड द लास्ट 2 games फॉर मुंबई सो वो एक कंसर्न है कि अगर इफ ही इज़ नॉट फिटिंग इन टू द मुंबई साइड या इट इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन आइडियली स्पीकिंग अगर किसी को इंजरी ना हो or fit ho, I will not change the squad as well as much as I would want Chahal to be there. जैसे मैंने कहा, he should have been there before. He's bowling well. Uh, I don't know. It is a very tempting thought, very very tempting thought. But मैं सोच रहा हूँ बाकियों के बारे में भी. Based on 4 games, do you really want to make changes? You know. So that's that. It's a catch-22 situation. Comment Locum, sir, what will captains decide today after winning the toss, chase or defend? Uh, दुबई का 50-50 रहा है मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है दुबई का लेट मी जस्ट चेक मैं कहीं पे देख रहा था इफ आई कैन सो बैटिंग फर्स्ट कैन ऑल्सो बी कैन बी क्वाइट गुड एक बार पिच तो मैंने देखा नहीं है उस दुबई पिच के ऊपर ब्रेक मिला है एक दिन का सो दैट माइट play a little better. Let me just quickly check. Uh, okay, but as far as I remember, इस सीजन भी ज़्यादा फर्क नहीं है बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड
Yeah, so batting first, batting second, Milnira does not have much of a difference. So I personally would feel okay, looking at the pitch, I don't know, I'm 50-50. I don't mind batting first, to be honest. Sorry if I don't think I've been able to convincingly answer your question, Lokam. But yeah, Siddhant Hande साहब ने पूछा can RCB give a chance to Tim David in place of Dan Christian for tomorrow's eliminator? मुझे नहीं लगता you need to change anything. I think Dan Christian की एक आधा over especially on slow pitches can be useful. Uh, डैन क्रिश्चियन को लास्ट टाइम भेजा भी था 4 नंबर पे इस पिच और अदर वाज इट 4 और 3 नंबर पे सॉरी 3 नंबर पे सो विच वाज आई डोंट नो थोड़ा सा मुझे अलग लगा बट मुझे नहीं लगता कि यू नीड टू चेंज टिम डेविड ही इज एक्साइटिंग ही इज डेफिनेटली एक्साइटिंग बट आई डोंट थिंक they will make any changes playing 11 में Siddhant is what my take is. Right. Venom, right, sir. Potential final according to you. Hmm. Mm. See, if Chennai, let's say Chennai lose the first game, as in today's game, then there'll be 4 losses on the bounce. It'll be extremely difficult for Chennai. So let's say DC goes through. Kolkata versus Bangalore. Oh my God. Don't make me do this, Venom. Oh Lord. Okay, let's put it this way. Because I want a new winner, and that will be confirmed only if there is a Delhi versus Bangalore finals. So I'm gonna go with that trend of thought. First time winners, Delhi versus Bangalore final. So you're assured कि यार first time winners होंगे. Right. Cricket spot. Sir, what will be your 11 against Pakistan in T20 World Cup? Oh, interesting. Right. अभी as of now, cricket spot straight away मेरे दिमाग में जो है, I won't mind Kale / Ishan to open with Rohit. So Kale or Ishan to open with Rohit and Virat at 3, 4 Surya, 5 Rishabh, 6 uh, Jadeja, 7 Hardik, but Hardik needs to bowl. That's my biggest question. Is Hardik bowling or not? But anyways, hopefully he will bowl. So 7 Hardik, 8, uh, 8, 9 would be obviously apna Bumrah and Shami as of now. Bhuvi has not looked that great. So 8 or 9 that. Varun Chakravarti 10. And 11, based on the pitch, seamer, batter, or spinner, depending on the pitch. Already we have Varun Chakravarti and Jadeja. अगर पिच ऐसे ही रहा स्लो रहा टर्न वाला पिच रहा तो माइट प्ले अ लेगी or might play another seam bowler. So yeah, that's roughly my playing 11 cricket spot. You've put me in a spot. Anyways, Agam Kohli. Sir, I'm from Punjab. Huge fan of Punjab Kings, but this team always disappoint me. Can you tell me what's the way ahead for them? Ah, I, you know what? कोई एक टीम जिसने मुझे disappoint किया and I'll tell you why. पंजाब ने और वो that is Punjab and I'll tell you why because individual अगर आप देखें तो there are some very 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 good players there or some players who've come through. Arshdeep, Ravi Bishnoi, Mohammad Shami's bowled well. ऊपर मयंक, केएल राहुल, शाहरुख खान को मुझे पता नहीं क्यों बीच में नहीं मैचेस खिलाए लास्ट गेम बिकॉज आई थॉट ही डिड वेल लाइक फर्स्ट लेग में एंड व्हेन आई लुक एट दैट टीम यार इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं बट अगेन विनिंग द क्रूशल मोमेंट्स यार कहीं ना कहीं वो मिडिल ऑर्डर का फेलियर चाहे वो निकलस पूरन हो चाहे वो क्रिस गेल हो यू नो आई 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 डोंट नो आई मीन मुझे
मुझे बस ये लगा कि दोज़ क्रूशियल मोमेंट्स अगर जीत जाते, जो जीते हुए मैच अगर जीत जाते पंजाब, तो दे वुड हैव ईज़िली क्वालिफाइड है। कम से कम मेरे दिमाग में एटलीस्ट 2 मैचेज़ ऐसे हैं जो जीते हुए मैच थे एंड पंजाब जस्ट मेस्ड इट अप। So yeah, and but you know what? I think Agam, you should be happy that Punjab is producing some good bowlers. Yeah, straight away Arshdeep and Ravi Bishnoi straight away comes to my mind. Good side, played well, but very disappointing because they're a good side. Because they're a good side, they did not play as well as they should have or they could have. Right, Agam. Um, G Paul, okay. Sir, will you stay in UAE for the World Cup? Yes, I'm staying back for the World Cup. Yeah, so this finishes and then I stay back till the end of the World Cup. Jishnu Banerjee, okay. What is the future of Riddhiman Sain Test cricket? Uh, I think it's still there. I think it's still fit. He would still be one of the best wicket keepers in world cricket, undoubtedly. We'll have to see. See, as of now, because Jishnu, there is no domestic cricket in terms of red ball cricket, Ranji Trophy. It'll be difficult, but I think Riddhiman, as long as he's fit, I think is good enough. But obviously, he's number two to Rishabh, and that number two will not go till somebody does really well in domestic cricket. Bharat is was obviously there. He's number three right now. एक आधा और कीपर है, अनुज रावत है दिल्ली के. He's good. Bharat is there. So yeah, but I think for them to take Riddhi's place as number two, डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होना जरूरी है, रणजी ट्रॉफी परफॉर्मेंस जरूरी है. राइट जिष्णु. Partho Sharti Mullik, how do you rate Rishabh Pant's captainship? आई थिंक वेरी गुड. मुझे तो बहुत पसंद आया ऋषभ जिस तरीके से कप्तानी कर रहे थे पहले 2-3 मैच में. पहले लेग में इट सीम लाइक ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप आ रहे हैं, आप यू आर अ यंगस्टर, आपके कोच पॉन्टिंग हैं, आपकी टीम में कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं, राइट. और खासकर सेकंड लेग में श्रेयस वाज अवेलेबल, शिखर, अजिंक्य, स्टीव स्मिथ, रविचंद्रन अश्विन, रबाडा. These are big names. Some international captains also. I mean, Ajinkya captain सी कर चुके हैं इंडिया की, स्टीव स्मिथ ऑब्वियसली, सो शिखर कर चुके हैं. सो आई मीन कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, मुझे लगा ऋषभ वाज वेरी गुड इन हैंडलिंग दो सिचुएशंस, टेकिंग कॉल्स, कब किसको करवाना है एंड स्टफ लाइक दैट. ही इज टेकन चांसेस, गैम्बल्स कुछ लिए हैं विच आई लाइक. एक कैप्टन को कुछ गैम्बल्स लेना, कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है. और मुझे जो अच्छी बात लगी कि ऋषभ डज नॉट शाई अवे, सेफ नहीं खेलता. अगर उसे लगता है कि गैम्बल ले सकते हैं, लेना चाहिए, ही डज दैट. और आई थिंक दैट्स अ गुड साइन. दैट माइट नॉट पे ऑफ at times, लेकिन that is a very very important facet to have, right. Aniket, sir, when do you see Harshal internationally selected as net bowler for T20 World Cup along with Umran? uh, I guess sometime soon. I won't be surprised अगर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट यू सी हर्षल. न्यूजीलैंड जो T20 शुरू होने वाले हैं 17 से, you might see Harshal there because obviously इतना क्रिकेट के बाद you would want to give Bumrah, Shami a break, maybe get them ready for test matches also. So yeah, I have a very strong feeling you will see Harshal in playing against New Zealand. Yeah. Sir, why do you think Virat is playing across the line? He's been dismissed by the same ball 3 times this season. Moreover, why is Kohli not able to play with a good strike rate against spinner Siddharth Gupta? Thank you for that question. Siddharth, first of all, ये विराट पहली बार नहीं, अगर आप पिछले 10 साल उठा के देख लीजिए, विराट का हर समय ही प्लेज अक्रॉस. ओके, क्योंकि शुरुआत से अगर आप देखेंगे, इज ऑलवेज बीन वेरी रिस्टी. पहले 3-4 साल ऑफ हिज करियर अराउंड 70% ऑफ द रन्स वुड बी थ्रू ऑन साइड. अभी अगर कवर ड्राइव की हम बात करते हैं, वो 2014-15 से ही इतना अच्छा कवर ड्राइव मारने लगे हैं और इतना ज़्यादा ऑफ साइड में खेलने लगे हैं.
सो पहले भी गिरता था, अभी भी गिरता है, सर उनका थोड़ा-सा गिरता है, ऑन साइड जाता है। लेकिन उनकी अच्छी बात ये है कि उतने ज़्यादा पैड पे नहीं लग रहे थे इसके पहले और नहीं लगते हैं क्योंकि उनका सर आगे रहता है। पैर के आगे जब सर रहता है तो आप मीट जो है बॉल को आप आगे करते हैं। जब सर पीछे रह जाता है तब आपका बॉडी वेट पीछे रहता है तो आप मीटिंग पॉइंट आपके बैट का भी पीछे हो जाता है। तो वो कभी-कभार थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ें हैं, वो आई डोंट थिंक इट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट। और क्या हो जाता है ना सिद्धार्थ कि जब आप फ़ोर्स करते हैं, आपको जल्दी रन बनाना होता है, तो यू फॉल बैक टू योर बेसिक्स और व्हाट वर्क्स फॉर यू, जो आपका स्ट्रेंथ है। और विराट का स्ट्रेंथ इज़ ऑलवेज़ बीन रिस्टी थ्रू मिड विकेट, थ्रू ऑन साइड। वो उनका स्ट्रेंथ हर समय रहा है। तो तभी आप देखेंगे उनको जब भी वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं या स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन इज़ ऑन साइड एंड इट इज़ विद एवरीवन, ऑन साइड सबका होता है। क्योंकि अपना बेसिक जो शॉट है इज़ दैट। सो दैट इज़ देयर। थोड़ा-सा वो अगर लेट हो जाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि सर थोड़ा पीछे रह जाए तो फिर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट चेंज हो जाता है और उससे कभी-कभार बॉल मिस कर जाते हैं। तभी लेग बिफोर के चांसेस बढ़ते हैं। कोहली इज़ नॉट एबल टू प्ले विद अ गुड स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिनर। थोड़ा-सा मुझे ये भी लग रहा है कि क्योंकि देखिए इट्स नॉट अबाउट कोहली अच्छे स्ट्राइक रेट इस सेकंड लेग में कम लोग ही खेल पाएँ क्योंकि वैसा पिच ही नहीं है। दूसरा ये है कि क्योंकि उतना ज़्यादा स्वीप नहीं मारते विराट, तो इन पिचेज़ में थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि आप सीधे बल्ले से टाइम करना या ऐसे स्लो पिचेज़ में आपको गैप फाइंड करना बोल-बोल के। बॉल तेज़ आता है तो यू कैन मैनेज योर बैट स्पीड, आपको पता है। लेकिन अगर कोई बॉल तेज़ आए, धीरे आए तो मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि वो स्वीप नहीं मारते तो वो एक मैसिव शॉट जो है अगेंस्ट स्पिनर्स स्पेशली इस फॉर्मेट में इज टेकन आउट ऑफ इक्वेशन। हालांकि लास्ट मैच में एक स्लॉग स्वीप मारा था बट ही डज नॉट प्ले दैट शॉट ऑफन इनफ। सो दैट इज माय टेक सिद्धार्थ। ओके, डू वी हैव धीरज राव साहब कह रहे हैं व्हाट्स द मंत्र ऑफ केक यार? Dheeraj, I think the mantra is to play with freedom. I think, okay, that is a very cliched thing, freedom. I think सब लोग वही कहते हैं freedom, but I think क्या जो हुआ ये है कि फ्रीडम आता कहाँ है? फ्रीडम आता है ऊपर से मतलब जब आपके सिलेक्टर्स या आपका कप्तान, आपका कोच ये कहता है कि भैया आप पूरा सीज़न खेलोगे, बट आपको इस तरीके से खेलना है। जब आपको वो सिक्योरिटी मिलती है, तब आप खुल के खेल सकते हैं और वही मेरे ख़्याल से कोलकाता के साथ हुआ है। वो सिक्योरिटी मिला है क्योंकि अगर आप कोलकाता की टीम को देखेंगे, तो ज़्यादा चेंजेस टॉप ऑर्डर में किया ही नहीं है, राइट? अगर शुरू से देखेंगे तो पहले इस लेग में वेंकटेश अय्यर, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, मॉर्गन, तो यही रहा है। जो चेंजेस हुए हैं, मेरे ख्याल से बॉलिंग में ज़्यादा हुए हैं। एक तो आंद्रे रसल का वाज़ फोर्स्ड चेंज, लॉकी फर्ग्यूसन का वाज़ फोर्स्ड चेंज और कहीं न कहीं ये चेंज ज़रूर हुआ है कि एक चेंज इस प्रसिद्ध और वॉरियर के जगह जो आए हैं अभी इज़ बेसिकली बिकॉज़ ऑफ द डेथ ओवर। मुझे अभी भी लगता है कि प्रसिद्ध क्या वो डेथ ओवर में ही डज नॉट हैव एज मच कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ यॉर्कर और वेरिएशन फॉर दैट मैटर। तो मेरे ख्याल से वो एक चेंज हुआ। आई थिंक दैट कंसिस्टेंसी इज वन रीजन एंड ऑब्वियसली यू नो सिक्योरिटी टू द प्लेयर्स कि आप खुल के खेलो। हैविंग सेड दैट लॉकी फर्ग्यूसन पैट कमिंस के ना आने से आई थिंक लॉकी फर्ग्यूसन आई मीन दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मे बी। साथ में वेंकटेश अय्यर द फॉर्म दैट ही इज इन और एटलीस्ट लास्ट 2 मैच में उतने रन नहीं बनाए बट you know, so he kind of carried the team through as far as batting is concerned. Nitish Rana last 2-3 match mein. So I think everything's falling into place. And the most important thing, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आपके 8 ओवर तो इन दोनों के पास हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों बॉल कर रहे हैं विकेट नहीं भी लेते हैं तो फिर 8 ओवर में 40 रन, 45 रन, बहुत बुरा हुआ तो 50 रन। सो आई थिंक स्ट्रेट अवे 8 ओवर तो आपके उन दोनों बॉलर से हो गए। सो आई थिंक
there's a lot that is working for Kolkata. Okay. Avi ka hai, sir, who impressed you the most? Avesh Khan or Harshal Patel? I think Avesh Khan, yaar. Harshal ने भी किया है, but again, we are comparing, very two top performers. और मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आवेश थोड़ा ज़्यादा राउंडेड लगते हैं मुझे। मैं उनसे पहले 6 पे भी करा सकता हूँ, मैं बीच में भी करा सकता हूँ और डेथ में भी करा सकता हूँ। हर्षल भी ऐसे हैं, लेकिन मे बी आवेश के पास थोड़ा-सा पेस भी ज़्यादा है, वेरिएशन हर्षल के पास ज़्यादा है। इट्स डिफिकल्ट बट फॉर मी आई थिंक आई विल गो विथ विथ आवेश। अगर मुझे दोनों में से एक चूज़ करना हो, अगर दोनों चूज़ करने हो तो प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आई डोंट आई मीन आई थिंक हर्षल और आवेश दोनों जो हैं न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। राइट। Oh, Jamie, how are you? Ah, Jamie, my man. Non-IPL related question. Just three quicks in. Yes, one of which is Bhuvneshwar, who hasn't had a very good IPL, and Hardik not bowling. Is the fourth option problematic? Jamie, yes. आई वाज सरप्राइज कि 3 सीमर का मुझे समझ में नहीं आया कि 3 सीमर क्यों? जनरली मिनिमम आप 4 लेते हैं और जैसा आपने कहा कि शामी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली बुमराह बीइंग बुमराह, बट भुवी अ, भुवी इज़ ऑब्वियसली नॉट इन फॉर्म, वैसे फॉर्म में नहीं दिखे हैं। साथ में हार्दिक का बॉलिंग ना करना अभी तक इज़ अ कंसर्न फॉर मी, जेमी, फॉर श्योर। एंड आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग कि इफ दैट्स द केस, if he is not bowling, should we look at someone like Shardul Thakur? You can still play him as a batter, as a power hitter. It's not that कि power hitter के हिसाब से भी, as a batter के हिसाब से भी he seem to be in great form. Then are you looking? Then should you be looking at Shardul Thakur, who is in really good form and also can contribute with the bat? Uh, matlab, you already have Jadeja as your so-called all-rounder. He'll come at number 6. Yeah, so I think yes, I was surprised to see only 3 seamers, and I would have picked Shardul any which way, yaar, or Deepak Chahar, but Shardul, uh, yeah, that would have, if you're playing 3 seamers and Hardik is not bowling, yeah, you have to pick 3 seamers. अगर हार्दिक नहीं बॉल कर रहा, देन यू हैव टू पिक 3 seamers, irrespective कैसा पिच है नहीं है. This is my take, Jamie. I think in white ball cricket you have to have 3 seamers, if not a one day में तो 4 ideally speaking, but in T20 में at least three seamers in the playing 11. In this case, I hope Hardik is bowling here. Right. Yeah. Thanks for joining in, Jamie. Now Shoaib Malik is in the park. Why is World Cup squad now? Will he play against India because he has a? I think so. अगर आप शोएब मलिक जैसे सीनियर प्लेयर, एंड आई थिंक एग्रीगेट के हिसाब से, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट experienced T20 players, and I think even run wise, I think he's either the highest T20 scorer or second. He'll be in the top two. Either it's, I can't get it right now, but either it's Chris Gill or him as the top scorer. So yeah, I mean somebody like Shoaib Malik with that kind of experience or seniority, अगर आप इतने किसी सीनियर प्लेयर को टीम में लाते हैं, यही सोच के लाते हैं कि उनको खिलाना है। आप इतने सीनियर प्लेयर को टीम में रख के, स्क्वाड में रख के नहीं खिलाएंगे, तो आई विल बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सरप्राइज, पॉल। ओके। Okay, Agam sir, can you please tell who should Punjab retain for next season, given that KL is interested on being retained? Is interested on being retained. Agam, I don't know about that. I don't know about that. See, Agam, अभी IPL खत्म होने चला है. I think end of January or first week of February would be the auction. Retention policy निकलेगा, I guess, after the World Cup. We don't know what the retention policy will be, Agam. लेकिन it will not be a lot of players, because दो नई टीमें आ रही हैं. It might be 2 retention, 2 right to match card max, you know.
देन क्या होता है, प्लेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है, सिर्फ ऐसा नहीं। पंजाब, आई एम श्योर पंजाब वुड वांट टू रिटेन केएल, लेकिन अगर आई एम जस्ट थिंकिंग, बैंगलोर में विराट कैप्टनसी नहीं करते हैं, बैंगलोर इज लुकिंग ऑब्वियसली लुकिंग फॉर अ कैप्टन, you know, you never know. So player might just say कि you know what, thank you very much, appreciate कि आप मुझे retain करना चाहते हैं, but I want to go into the auction. So that'll be interesting to see whether, you know, whatever happens retention policy के बाद. So a lot of time, so we'll see आगा. रौनक वाधवा कह रहे हैं, isn't it too early for Umran Malik in T20 World Cup practice का? Too early, अच्छा, okay. Too early practice squad. आई वोंट से टू अर्ली रौनक, क्योंकि आप प्रैक्टिस स्क्वाड में क्या होता है कि आप जनरली चाहते हैं अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉलर्स जिनके अगेंस्ट आप प्रैक्टिस कर पाएं, जिनको आप जाके खेलेंगे। सो आप आगे चल के यू विल मीट विल मीट नोकिया, यू विल मीट स्टार्क और समवन जो 150 पे डालते हैं। तो आपको नेट पे भी ऐसे कुछ बॉलर्स अगर हो तो इट इज गुड फॉर योर प्रिपरेशन, राइट? Even though he will not, or he might, I mean, you never know, but chances are he will not end up being in the squad or playing. But being part of the squad for practice, I think makes more sense, क्योंकि उनके पास जो ability है वो किसी और के पास नहीं है। इंडियन क्रिकेट में 150 के ऊपर बॉल डालना, 150 के करीब बॉल डालना कंसिस्टेंटली, आई थिंक इट्स गुड टू हैव समवन लाइक हिम इन द नेट सेशंस, कि एटलीस्ट आप रेडी हो जब आप खेलोगे मैच में जाके। सो दैट्स व्हाट आई थिंक, रौनक। Ayush Kaushik, hi sir, how are you? I'm very good. Ayush, my question is, looking at KL Rahul form, will Kohli open the innings or not? Not just that, even for that matter, ईशांत's फॉर्म है लास्ट दो मैच में, एक मैच नहीं दो मैच में। और मुझे ऐसा लगता है, आई वुड लाइक टू सी विराट बैट एट 3 फॉर सिंपल रीजन कि इफ द पिचेस बिहेव द वे दैट दे हैव, जहाँ पे बीच के ओवर में आपको यू हैव टू बी अ ग्राफ्टर, जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक विराट से बेटर उस लिहाज में कोई बैट्समैन नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में जो मैनिपुलेट कर पाए, जो स्ट्राइक रोटेट कर पाए जैसे विराट करते हैं। तो आइडियली स्पीकिंग आई वुड वांट विराट टू बी देयर फ्रॉम द 7th to the 14th ओवर और टू द एंड, टू बी ऑनेस्ट। बट वो बीच के ओवर जहाँ पे बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, थोड़ा फंस के आ रहा है, so he can manipulate the field, build an innings and carry the innings forward. So ideally speaking, मेरे हिसाब से विराट should bat at 3. I think as an opener there are other players uh, who can give you as much, but बीच के ओवरों में I'm not too sure there are enough batters who can give you as much as Virat. Right. Austin Dikuna, hi. Austin Deep sir, what's the best way for RCB to beat Kolkata tomorrow? RCB lost Q1 spot by 4 runs. Yes. Oh, who are your top 5 Indian batsmen of all time across formats? Austin, top 5 batsmen across all times. ये थोड़ा बाद में बात करते हैं because I think I would need to think about it. ऑल टाइम तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैंने क्रिकेट देखना ही शुरू किया 80s से, तो या सो उसके बाद से ही बता पाऊंगा। ओके, लूजली स्पीकिंग, टॉप ऑफ माय हेड, माय नंबर 1 विल बी मिस्टर गावस्कर फॉर श्योर। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। I've heard a lot about Gundappa Vishwanath. I've seen a bit of him because he had kind of left cricket by the time I started watching cricket. तो इट बी अनफेयर, सो मैं 83 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, राइट? सो उसके पहले के आई डोंट वांट टू गेट इनटू। राहुल द्रविड़, विराट, फोर 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 इंडिया, और कौन है? क्वाइट अ फ्यू यार, आई थिंक उसके बाद देयर आर अ लॉट ऑफ देम। यू हैव ऑब्वियसली पीपल लाइक मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, even MS Dhoni. So yeah, fifth, I'll keep it open बाद के लिए. All right. Anyways, sorry. So ये हो गया पहले, फिर पहला क्वेश्चन था, what do they need to do? I just think they just need to be themselves, to be honest, or something that has worked for them
uh, has not worked, sorry, for them as much for Bangalore is picking early wickets. और अगर वही आप देखें तो कोलकाता का स्ट्रेंथ बैटिंग का रहा है कि वेंकटेश और शुभमन गिल गुड स्टार्ट. तो आई थिंक अगर वो अर्ली विकेट्स मिल सकता है, देन यू क्विकली गेट इनटू द मिडिल ऑर्डर व्हिच केकेआर का हैज नॉट रियली फायर्ड दैट मच. तो वो एक सिचुएशन, एक चीज जिसके ऊपर नजर रखूंगा. और या एंड सेम द अदर वे अराउंड, आई थिंक how do you play? How does Maxwell play 8 overs? क्योंकि Maxwell middle order has been brilliant right through this season. इस leg में he's the by far the best middle order batter इस पूरे season में. So how does Maxwell, ABD, Virat manage 8 overs of Sunil Narayan and Varun Chakravarti? Two things if I have to come up with, right? Right. Okay. Next one. Okay. So last two questions, please, guys. Gotta go ready. Okay. निकलना भी है मैच के लिए. Ganesh Shevate Sahab कह रहे हैं Namaste Deep sir. Question one: your thoughts on the squad we announced and the players' performance in the IPL so far. And question number two is: what is your opinion about the grounds prepared for ICT 20 World Cup? Ganesh ji पहले बता चुके हैं और पहले बात कर चुके हैं about the grounds. But because you've asked quickly, I think एक वीक का ब्रेक होगा between these three grounds, शारजा, दुबई and Abu Dhabi, क्योंकि पहले first week of qualifiers will be in Muscat. उस वीक में the grounds are handed over to ICC. The ICC curator Mr. Atkinson comes in and takes charge of the ground. ऐसे नहीं रातों रात एक हफ्ते में बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन मुझे दुबई और अबू धाबी मुझे लगता है विल प्ले बेटर. लेकिन शारजा का मुझे डर है, बिकॉज शारजा का वो पिच, इट्स अ बिट ऑफ अ कंसर्न फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो रातों रात चेंज हुआ. इनफैक्ट दुबई का भी यार लास्ट 4 मैचेस हैव बीन एवरेज स्कोर. लास्ट 4 गेम्स अभी मैं लिख के होमवर्क ही कर रहा था, हैज बीन 137 यार, 137. So yeah, I mean, hopefully, again, I wouldn't say hopefully, क्योंकि for India, I think 140-50 game is good. Then suddenly the big power hitting teams like West Indies and England, उनका थोड़ा ये कम हो जाता है, edge थोड़ा कम हो जाता है, and obviously India का edge बढ़ जाता है because of spinners and stuff like that. Right. Okay. Thoughts on the squad? I think thoughts on the squad looks good. अभी जैसे जेमी के साथ, अभी जेमी का सवाल था और जेमी से बात कर रहा था, is about एक और फास्ट बॉलर होता someone like शार्दुल ठाकुर, because he's bowling well. He's been phenomenal यार last 4-5 गेम में. Not just that, थोड़ा सा बैटिंग में भी हेल्प मिल जाता, थोड़ा सा डेप्थ बढ़ जाता बैटिंग में. एंड ऑल्सो चाहल, 6 या एक सीरीज अच्छा नहीं गया चाहल का, एवरेज गया, एंड आई थिंक he should have been there. Well, that's that. Okay, let's take the last question. Ronak, can anyone play in the squad just for their captaincy skills, just like Morgan and Dhoni in this IPL? Is it okay if captain is not making runs but he's winning the matches for his team by captaincy? Ronak, ideally speaking, no. And it is also kind of disrespectful to say कि they're playing as captains. ऐसा मुझे लगता है. Yes, they've had a bad season, MS or Morgan, but they're good enough players. So to say that they're playing as captains, I know where you're coming from. So don't get me wrong, Ronak. I know where you're coming from because their contribution as far as batting is concerned is not much. So yeah, I mean, it is. I don't think it is fair, because what you do generally is, in any team, is you pick your playing 11 and then you pick the captain, not the captain and then playing 11. But having said that, franchisee cricket is different. Franchisee cricket is very, very different. And how things are operated and how things work, franchisee cricket में अलग है. But
Yeah, just for the captaincy. Yeah, but having said that, these two are the two top captains, I guess, in the league. Right. Thank you, everyone. Thank you guys for tuning in and being with me for the last 45 minutes. I'm sorry for not being able to take more questions जितना मैंने लिया है. I think मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस है. So thank you again for tuning in and spending the 45 minutes of your precious time with me and asking those questions. Hopefully I've been able to answer as many as I could possibly have. और मिलते हैं बहुत जल्दी. एंजॉय द प्लेऑफ्स. वर्ल्ड कप के पहले मिलेंगे फॉर श्योर. एक और लाइव करेंगे अब, मे बी नेक्स्ट वीकेंड और समथिंग. And let's talk about the World Cup. Let's get into the World Cup mode. Enjoy the playoffs, and thank you again. And I'll see you soon. Take care. Bye.